Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to learn the conjugation of Korean verbs in future tense. We already learned the conjugation of verbs in the past tense and present tense. The rules of conjugating verbs in past and present tense, they were quite similar. But when we talk about future tense, the rule of conjugation is slightly different. Okay, so let's see how to conjugate verbs in the future tense. Whenever you want to conjugate a verb in the future tense, what you have to do is you need to add either lir followed by khoshida or il followed by khoshida to the verb stem. Okay, जब भी आपको एक verb को future tense में conjugate करना है तो जो verb stem है उससे या तो आप lir khoshida अटैच करोगे या फिर il khoshida अटैच करोगे. Okay, now how we are going to do this, let's see. Now this lir khoshida or il khoshida, this ending is made up of three parts. Okay, first part तो lir और il है, ये directly verb stem से attach होता है. Okay, और इसका purpose क्या है? It tells us that we are using the verb in the future tense. So whenever you attach lir or il to the verb stem, it means that the sentence is in the future tense. Okay, verb हमारा future tense में convert हो जाता है और verb future tense में convert होगा तो पूरा sentence future tense में convert हो जाएगा. Okay, then there is a space. Next comes khot. Khot means thing. We already know the meaning of khot because we learned this when we talked about how to say this thing, that thing, you know, e-khot, khu-khot, ch-khot in Korean language. So that thing, वो जो thing था, वो है khot. Okay, and khot से क्या attach होता है? ida. Ida, the verb to be, that is attached directly to khot. Okay, तो जो ending है, वो three parts में divided है, lir or il, khot and ida. Now there are three cases in front of us. First is if the verb stem it ends in a vowel, then we have to add lir khoshida to the verb stem. Okay, vowel से अगर end हो रहा है verb stem तो उससे क्या attach होगा? lir followed by khoshida. And if the verb stem ends in a consonant, then you have to add il followed by khoshida to the verb stem. Okay, now there is a third case. ये slightly different concept है, हमने past और present tense में जो पढ़ा था उससे. Okay, so remember this. If the verb stem ends in lir, अगर हमारा verb stem जो है वो lir से end हो रहा है, then you have to add khoshida to the verb stem. Okay, already हमारा verb stem lir से add हो रहा है तो हमें एक extra lir attach करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट आपको क्या अटैच करना है? khoshida. ओके, नाउ वी नो कि वी कैन नॉट यूज वर्ब्स इन द डिक्शनरी फॉर्म वेल वी आर टॉकिंग. ऑलराइट, कम्युनिकेशन में आपको वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना ही पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पे ईदा वर्ब यूज हो रहा है, सो वी नीड टू कॉन्जुगेट इट. ओके, वी कैन नॉट लीव इट इन दैट डिक्शनरी फॉर्म. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्जुगेट ईदा इन फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस? फ्यूचर टेंस में जब भी बात हो रही है तो ईदा इज ऑलवेज कॉन्जुगेटेड इन दी प्रेजेंट टेंस. ओके, हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में ये किससे पता चलेगा? जब वर्ब स्टेम से lir या il अटैच हो जाएंगे तो आगे ईदा जो आ रहा है khoshida के अंदर उसका फ्यूचर टेंस में होना जरूरी नहीं है. ओके, ईदा इज ऑलवेज कॉन्जुगेटेड इन दी प्रेजेंट टेंस whenever we are talking about future tense sentences. Okay, the conjugation of ida, it can be done based on different honorific forms. जो हमने 3 honorific forms पढ़े थे, casual, informal, formal. आप जिस भी फॉर्म में सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं उस फॉर्म में ida का भी conjugation हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर conjugating in the casual form तो verb stem से या तो lir या il अटैच होगा. उसके बाद casual form में ida का conjugation क्या है? इया, तो क्या बन जाएगा? khoshia. If you are talking in the informal form, khoshieyo
and in formal form khoshimnida. Okay, यहाँ पे ईदा की जो conjugation है वो इया, इएओ, इब्निदा ऐसा क्यों किया? क्योंकि खौत it ends in a consonant. हमने ईदा का conjugation सीख रखा है, तो अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, so you can go and watch that video where we learned how to conjugate ईदा. Okay, now it happens sometimes कि खौत जो है उसे shorten कर दिया जाता है खौ में, just to make a short sentence and to make it easy for us to pronounce. Okay, तो खौत को खौ इसमें शॉर्ट कर दिया जाता है, शियत रिमूव कर दिया जाता है. तो इस केस में ईदा का कॉन्जुगेशन भी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि खौ जो है वो एक वॉवल से एंड हो रहा है, तो इसलिए ईदा का जो कॉन्जुगेशन है वो इस केस में क्या होगा? कैजुअल फॉर्म में खोया, इनफॉर्मल में खोयो और फॉर्मल में खोइमनीदा. ओके, नाउ we will conjugate ida in the informal form while practicing the examples in this video because it is the most common honorific form used in conversation. Okay, you can practice yourself by conjugating ida in casual and formal form. It is very easy, but in this video we are going to focus on the informal form. Okay, now let's start with the first case. If the verb stem ends in a vowel, then we have to add lier khoshieo or lier khoeo to the verb stem. Okay, either you can use khot or you can use kho. दोनों examples हमने use किए यहाँ पे. Suppose for example I have to conjugate the verb kumbuhada. So first thing you are going to do is you will remove da and the stem will be kumbuha. Okay, now there are two ways. आप khot use करोगे तो क्या हो जाएगा? खुम्बू हाल खोशिएओ. ओके, हियर द वर्ब स्टेम एंड्स इन ए वॉवल, सो वर्ब स्टेम से क्या अटैच हो गया? लियर फॉलोड बाय खोशिएओ. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू से आई विल स्टडी. 저는 공부할 것이에요. Another way to do this is by using ख. तो क्या हो जाएगा? 공부할 거예요. ओके, बस खौत की जगह ख आ गया, तो इस वजह से ईदा का कॉन्जुगेशन भी चेंज हो गया. मीनिंग वही है. इफ आई हैव टू से आई विल स्टडी, आई कैन ऑल्सो से 저는 공부할 거예요. ओके, बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस दे मीन द सेम, आई विल स्टडी. मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, बस जो रिटन वर्ड्स हैं उनमें चेंज आया. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वर्ब टू सी और टू वॉच, दैट इज पोदा. हियर द स्टेम इज po. The stem ends in a vowel, so what will be the ending? Lier khoshieo or lier koeo. Both of them are correct, so it will become pul khoshieo or pul koeo. Alright, suppose I have to say I will watch television. 저는 텔레비전을 볼 것이에요. And there is another way, that is 저는 텔레비전을 볼 거예요. Okay, don't forget, remember this, ये जो उल है टेलीविजन के बाद, it is object marker. Okay, इस उल में और जो हम अभी पढ़ रहे हैं जो फ्यूचर टेंस को मार्क करता है whenever it is attached to the verb, उसमें डिफरेंस है. Okay, here il is an object marker because it is attached to a noun. Okay, ये बहुत डीप ग्रामर है, कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है, that why lier or ul is attached to a verb stem and why khoshida is following lier whenever you are translating a sentence in the future tense in Korean language. This is very complicated grammar. We are going to cover it later on. For now, just remember कि कौन सी ending attach होगी. Okay. Next come the second case. If the verb stem ends in a consonant, then you have to add either ul followed by khoshieo or ul followed by koeo to the verb stem. Let's see examples. First is the verb
먹다, to eat. Here the verb stem is 먹. Now the verb stem, it ends in a consonant. तो क्या ending attach होगी? Either il khoshieyo or il koyeyo. 먹을 것이에요, 먹을 거예요. Suppose I have to say I will eat. Now there are two ways. 저는 먹을 것이에요 or 저는 먹을 거예요. Both of them are correct. Next is the verb 읽다, which means to read. Here the stem is ik. तो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो क्या एंडिंग अटैच हो जाएगी? il 것이에요 और il 거예요. 읽을 것이에요, 읽을 거예요. Suppose I have to say I will read a magazine. So there are two ways to say this. 저는 잡지를 읽을 것이에요 or 저는 잡지를 읽을 거예요. Okay, both of them, they mean the same. I will read the magazine. Okay, next is the last case, that is whenever the verb stem ends in lir, then we have to add either 것이에요 or 거예요 to the verb stem. Okay, let's see some examples. The first one is the verb to open, that is 열다. Stem क्या है? 열. क्योंकि stem already ends in lir, तो हम एक extra lir attach करने की need नहीं है. Okay, so what we are going to attach either 것이에요 or 거예요, and it will become 열 것이에요 or 열 거예요. For example, I have to say I will open the window. There are two ways again. 저는 창문을 열 것이에요 or 저는 창문을 열 거예요. Okay? Next comes the verb 울다, which means to cry. Here the stem is ul. The stem ends in lir, तो डायरेक्ट क्या अटैच हो जाएगा? या तो 것이에요 या फिर 거예요. It will become ul 것이에요 or ul 거예요. Suppose I have to say I will cry. Two ways. 저는 울 것이에요 or 저는 울 거예요. Okay? So today we learned the conjugation of Korean verbs in the future tense. I know it is a bit difficult as compared to the conjugation of verbs in past and present tense, but again this concept is very important to understand. इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर यूज हुई है, वो अभी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए समझना. We'll understand that later on after some time. So I hope you liked this video. Don't forget to like, share and subscribe Korean Express YouTube channel. Thank you.